Minister himself was present to set the poll agenda as well. Sending out a clear message to the Vipaksh, he says that the NDA is coming back to power even stronger. And when we talk about the next general elections when will be taking place, well, there will be no space for any rivals. अंत में कोई ऐसा काम जो बचा है या सब पर टिक मार्क हो गया? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि भाई सीमांत क्षेत्र में व्यवस्था लानी है, कानून का राज लाना है, एंक्रोचमेंट दूर करने हैं, रिलीजियस एंक्रोचमेंट जो गैर कानूनी रूप से बने हैं उसको दूर, हर एक काम, नशा मुक्ति भी अभी बाकी है, ढेर सारा है। तो एक समाप्त होता है तो कोई दूसरा शुरू करता है। तो यानी कि 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? नहीं, मैं तो मानता हूँ 2047 तक जो भी सरकार है उसने करना चाहिए, मगर इतना मानकर चलेगा 29 में हम ही आएंगे और किसी का कोई चांस नहीं है। असम में भी चुनाव है तो असम का रुख कर लेते हैं। असम में आपके अपने नेता हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस पर रेड लगा दी। सारे नेता वहां से ले लिए? सारे नहीं आए हैं, 2 ही नेता आए हैं। और ये तो आपको मेरी जगह राहुल जी को पूछना चाहिए कि आपके यहां से सब भाग क्यों रहे हैं। मेरे यहां आ रहे वो छोड़िए, वहां से क्यों भाग रहे हैं। वो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि किस तरह से ये पार्टी चल रही है कि सारे उनके नेता भाग रहे हैं। लेकिन उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि शायद बीजेपी पूरी तरह से तैयारी नहीं है तो योद्धा वहां से ले रही है कांग्रेस से। नहीं, देखिए, आपको मालूम है असम में कितनी सीटें हैं। हम दो नेता उनको यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो थोड़ा सफोकेशन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा बचे खुचे हिंदू लीडर में हम 2 ही है, तो हमें भी ले लो। तो हमने ले लिया, ठीक है। 2 नेताओं से ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ नेतृत्व की क्राइसिस है। 10 साल से हम सरकार में है वहां पर, 10 साल से, और सफल सरकार चली है। एक जमाने में आसाम से जो खबरें आती थी, बंद, ब्लॉकेड, फायरिंग, बम धमाके, टेररिस्ट ग्रुप, आज आसाम में एक भी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बचा है। पूरे को साथ हमने समझौता, 13 समझौते आसाम ने किए हैं। 10,970 लोगों ने हथियार डाले हैं, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। काफी लोग उसमें से नौकरी में लग गए और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़े। आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डेवलप स्टेट के बरोबरी पर आकर खड़ा है। आज वहां बिजली की कमी नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी धड़ल्ले से मना रहे हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं बम धमाके नहीं होते। ये कांग्रेस के जमाने में जो होता था वो सब बंद हो चुका है। और मेरी बात याद रखना, आसाम हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार लगातार सरकार बना। Kritika, good morning. The Union Home Minister, the grand finale of the Times Now summit, and a range of issues that he has addressed, right from elections to the West Asia conflict to upcoming elections, and of course, when it comes to setting the stage for the next general elections, all of that has been highlighted by Amit Shah. Well, absolutely, Amita, and here his final remark as well. Over 90 seats is the BJP's game plan as far as Assam elections is concerned. The Home Minister has also taken allegations of raiding Congress head-on and has said that only 2 prominent leaders have joined, and that too out of the suffocation that they have felt. He said that the leaders said that they were the only Hindu leaders left as far as Assam Congress are concerned. Yes, to the BJP. This is the word that is also coming in from that interview as well. We've also seen, in fact, how Mr. Amit Shah also was all guns blaring against Rahul Gandhi, has asked the Congress party to introspect why in the first place are Congress leaders choosing to exit from the party, from the Grand Old Party, and in fact come into the BJP's fold. Now, this allegation, also remember, the opposition at multiple times have raised the issue of how the BJP has used agencies, whether central or at the local level, in order to induce and, in fact, threaten leaders to switch camps. So this is also a part of the political rhetoric that we've been seeing continue from the Congress as well as the BJP for quite long. But here, Mr. Amit Shah has
clearly sounded, in fact, his forecast for the Assam elections. 90 plus seats is what the Home Minister has stated. Over to you, Amita. Absolutely. And, Kritika, quelling the rumors as well. As far as currently what has been India's stand so far, the all-party meeting that happened, the Prime Minister's statement that he gave in both houses, and what the opposition has been doing when it comes to questioning India's foreign policy, all of those rumors and fear-mongering, the doubters, and that has been quelled by the Union Home Minister yesterday. Well, absolutely, clearly. He's also, in fact, spoken about security as far as also concerned on the topic of, in fact, of making India Naxal-free by the end of this very month itself. Is also stated that, in fact, more than any big announcements, the peace in itself would be the call for how India has progressed and how, in fact, Naxalism has been dealt with as far as the central government is also concerned. Over the past months, in fact, we've seen lots of meetings as well as developments on this front. And Mr. Home Minister, last night, speaking exclusively to our group editor-in-chief, Navika Kumar, has clearly stated that the government is very well on track, in fact, to make this the roadmap as far as upcoming elections and the future elections is concerned. Where does the BJP stand, and what is the vision that what we are looking at that has been set by the government, that is being highlighted by the Union Home Minister at the Times Now Summit 2026. Kritika, for the moment, thank you very much for joining in. Now, today is the 28th of March.